Hello, ladies and gentlemen. Today I've got with me the very inspiring, awe-inspiring guest today with me on the show, Dr. Rakhi Anand Agarwal. She is loving, she's kind, she's compassionate, and she is generous. An awe-inspiring soul she is. She's love, she's life. She's the reason for many people to live, and they are not just in a blood relation, but they are someone who are outsiders, but there is a connection that is through empathy. She lives in heart of people, thousands and thousands of people. She has empathetic approach and remarkable and inspiring contribution to the whole society. That's our very special guest and a very dear friend, Dr. Rakhi Anand Agarwal. So if I'll tell you what she has done to achieve this level, what kind of contribution she has done, you would just go flat. You would just go so completely inspired by her journey. So she has lived every moment of her life to add upliftment, to add empowerment and elevation, especially to the females and especially to the children. Because of her contribution, a small state, a small district like Bijnor today has less female foeticide, has a lot of opportunity for females to work and a great healthcare system. That's Dr. Rakhi Anand Agarwal. Dr. Rakhi, thank you so much for being with us on the show. We welcome you wholeheartedly on Inspiring Lives. And no one other than you really deserve to be one of the chapter of my book. And I've been like really reading about you. I've been studying you as a person, the kind of value addition you are bringing to our society as a whole. We welcome you by heart. Thank you so much for being with us. First of all, Priyanka, thank you so much for inviting me today. I'm really obliged, the way, the kind of introduction you're giving me. I just hope that, I'm really worth it. But thank you so much for inviting me today. And it's a pleasure to be on your show. Thank you, Dr. Rakhi. Dr. Rakhi, we have seen your journey and we have shared stages together once for the award show, remember? And they're like listening to your journey, listening to your early life and how things have molded and how you have really made the best out of all the opportunities. And now you are living a life and you have rediscovered the purpose of your life and you're living the life for servicing others. This really gives me always that awestruck moment, and this had been in my mind all the time to have you on my show any day. In fact, last year when we were doing the public speaking championship, I wanted you to be one of the jury, but we could not make it. So it was always in my dream and always in my desire to bring someone like you who is a shiro for millions of women, who is today, even in this lockdown, I've been seeing the kind of contributions you are doing, which is completely remarkable. Dr. Rakhi, I'll give a small, brief, also, intro about you, and then we'll move to the questions. And perhaps, our viewers would like to know the entire journey all about. Okay, so ladies and gentlemen, now this person has the most kindest and the golden heart. When I say it, I really mean it because I'm going to prove it to you right after when I'm going to, we are going to evolve the entire journey of Dr. Rakhi Anand. You will know this daily-eyed girl who comes from the city of spick and span, who comes from the city of glitter and glam, has actually moved to a state where there are hardly any facilities. The things are still bettering now, but there were hardly any facility when she moved out. So I'll just will quickly unfold those secrets from Dr. Rakhi only. Dr. Rakhi, I get that you have faced the toughest tide of your life with a huge cultural shift. Yeah, moving from a city of glitter, moving from a city which is completely busy to a life which is of limited resource, to a life with almost, I mean, a place which has almost no facilities in the beginning. And still you emerge like a rainbow. And you have given hues of colors to a lot of women today. What was the motivation behind it? And what made you contribute so well in lives of these thousands of people who you just have a relation of empathy? Please share with the audience. See, shifting from Delhi to a place like Najibabad, it was totally a different experience and something which I'd never thought in my life. And I kept trying for initial 10 years to just, leave this place and go away from here and move back to Delhi because I never had any such purpose in my life over here.
But being financially independent helped me a lot. I think if I wasn't financially independent, I had nothing to do in a small place, and coming from Delhi and driving on the roads, going to the bank yourself, and coming to a place which is a small town. You can't move out in the clothes that you desire, and you can't just drive out, and you just can't talk to anybody out there. So that was a big cultural shift for me. But just because I was financially independent and I was in a profession like a doctor's profession, so I was meeting different people every day. So while meeting all these people, I realized that me being financially independent and a woman who is with all free ideas and liberated, and I am able to live, I'm also having difficulties living in this place. So every day I used to meet such patients. Then I realized that what kind of a life they must be living. Is it like how these women who are hardly barely educated, and most of them who are just treated like baby making machines. So I always used to wonder how these women live. I really wanted to go to some of their houses someday and see how is their lifestyle. That used to intrigue me a lot. And it used to fill me with compassion also, because I used to feel, what if I could do something for them? So it was a cultural shift. But I think I spent initial few years thinking about all these things and then slowly building it up. And how I built it up is because it is my innate nature. This is my upbringing. This is not something which I was taught at the age of 40 or at the age of 30. When I was very young, I remember very soundly, I used to live in Lajpat Nagar, and I was in school, and there was a mission called uh, something with the padhai. Now I'm forgetting the name. So I used to go to a very small village nearby. I used to walk to that village and take my books and teach all the people out there kaka gaga and abcd. And I used to think, what if I'm at least able to teach them how to write their names? And at that age, I must have been not even a early teenager maybe. So these things were innate. I saw my mother contributing to people who were not so well off, and giving them some asking them to acquire some skill, and buying a video camera for them or something like that. And she used to herself teach our maid kids. We've seen that since the beginning of our life. So this is not something that has come now. This was already there. And combined with the fact that I'm staying here in this place, I think it all clubbed up to be what I am today. Dr. Rakhi, truly remarkable. As I always say, that aura and inspiration reflects from your personality altogether. I have seen your, both children, like, they've been child prodigy themselves. How do you really balance it out when you are in such a remote place? जब आप इस तरह की जगह पे रहते हैं where there is no company and children are still evolving, बहुत ही खूबसूरती से वो evolve हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे रास्तों पे वो चल रहे हैं. So how do you really balance it out, and what kind of upbringing, what kind of guidelines you are putting day to day उनकी जिंदगी में जिनसे we are seeing them doing the child prodigy altogether. See, when I came here, luckily, that the only best thing about Najibabad was the friends circle out here. I got, sort of light-minded five of our group friends. I can say five couples who became, even now we are five or six couples. We're very good friends. So I always had people who were like-minded to share. It was never like I was working in a very close group of people, just five or six couples. And for initial 10 or 12 years, we barely went out of that circle. So that way we were lucky. As for the children, yes, I was very, very worried. And that took me out after 10 years at the peak of my practice. I even left my practice from Najibabad and went to Delhi for 2 years. And I thought of giving a good schooling to my children. But eventually I realized that my children are very young. They are in hardly in nursery and first standard. So more than a school, they need me. I need to set an example so they can follow me through an example, rather than them studying in a very good school but not following the values that I wanted to instill in them. So that was at a very young age. But within 1 or 2 years, when I had the support of my friends, especially my teacher, Dr. Randhava, who really helped me to migrate to Delhi and gave me the confidence that I could still make it big in Delhi itself. But I think because of the children I went there, and because of the children I came back, because I thought there is something that I can teach them. I can teach them to be a good human being, which I think
It's not the responsibility of any school to teach them that. It's the responsibility of the parents. So what I got from my upbringing, I didn't want to work in Delhi for long hours and devoid them of that kind of upbringing. So that's one of the reasons why I came back to this place, the small place. Wow, that is truly commendable. मुझे एक चीज बताए, like you said that at an early age you had that thing innate in you. So who are the people basically who had the deepest level of influence in your life to be always like this, giving empathy? I always see you like a Mother Teresa, who's just like trying to absorb everyone with love, with everyone with a lot of acceptance. That's what I've always seen in your nature. So what is that? Who have been the kind of person who have been inspiration behind all this? The first and foremost is obviously my mother. She used to work for American Embassy. She had three and then four kids, and we were three daughters and a son. For obvious reasons, that a son is more important than daughters. I was brought up with this kind of mentality in the social arena, but my parents and even my grandmother, they sort of didn't believe in that, and I was the eldest child, so I got the maximum love I could from all my my family members. So I was the most loved child, so that always instilled me with a confidence. I used to see my mother, who worked for the American Embassy, and at the same time she used to prepare lunch, and she used to prepare our breakfast and send us to school, go do her job, come back and make dinner for us. So that really inspired me to do kind of hard work. That really made me think that nothing is possible without doing hard work, no matter what it is. Then secondly, it was my dadi, my grandmother, who really took care of us, because when we were home and mom was working, my grandmother was a lady that I'm yet to see such a powerful and such a lady, in my life, who was so influential. She was a natural leader. Yeah, the whole block in Lajpatnagar used to, listen to her. No matter from which this thing they came, from which society they came, from which religion they came, she was a natural leader. She would teach them, kind of things like jute, hang walls, and things like that, some craft work and things. And the maximum impact what had in my life was that my grandmother, when we had these Sikh riots, it was a bad scene, and I was in Lajpat Nagar, and um, all my neighbors were Sikhs, and we saw the rioters from the window, and we saw them, destroying houses one after the other, and the cars, they were damaging the cars and stuff. So my dadi, because she was standing right in front of our neighbor's house. She stood, that lady alone stood there. I saw it from my window. I can never forget that scene. I even remember the kind of clothes she was wearing. She stood there and she said, "This is my house and none of you can touch it." Because we were Hindus, they were sparing the Hindus, and they were implicating all those Sikhs for Indira Gandhi's death in those times. So that was a horrible scene, but we all used to live with a lot of unity. So that brave woman just stood there, and the rioters had to leave that house. So I don't know, something must have come, from her. And my dad, of course, he always wanted all of us to be financially independent, not being dependent on anybody. That is what he instilled in us from the beginning. And obviously my teachers, my Dr. Randhawa, Dr. Sonal Randhawa, I want to mention Dr. Poonam, Dr. Neena, Dr. Shusham. They have all been a milestone. उनका इतना सपोर्ट रहा है, और इतना I'm trying to speak in Hindi because I'm seeing a lot of my Hindi speaking people are joining in. तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी जो relate करते हैं, तो is it okay जी if we have? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो उनका इतना इन्फ्लुएंस रहा है और इतना सपोर्ट रहा है मेरे टीचर्स का, मेरे गुरुओं का। कल टीचर्स डे भी था, तो उनको मैं इस माध्यम से बहुत ज्यादा धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि उनका जितना सपोर्ट रहा है, उसी ने मेरी लाइफ को आज तक शेप अप किया है और आगे भी करती चली जाएगी। बहुत खूबसूरत एंड हमेशा की तरह फुल ऑफ एम्पैथी, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। और आप हमेशा ग्रैटिट्यूड में जीती आई है, मैंने अक्सर देखा है। In fact, this what I really truly admire about you as a human, as a person you are, and as a leader you are. Dr. Rakhi, we have also seen
पेंडेमिक के टाइम पे भी सखी फाउंडेशन को आपने बहुत अच्छे से चलाया है। सखी फाउंडेशन के माध्यम से आपने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, विच इज लाइक आपने उन बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अरेंज की है। आपने गवर्नमेंट को स्वदेशी मास्क के लिए बोला है, गवर्नमेंट ऑफिस में मैंने आपके देखे हैं, यू नो इन अ बल्क क्वांटिटी यू आर सप्लाइंग देम, इन द हॉस्पिटल्स यू आर सप्लाइंग देम, और इनसे वो बच्चियां अपने लिए सामान खरीद कर आ पा रही है, अपने खर्चे कर पा रही है, दे आर एबल टू लिव दैट हैप्पीनेस मोमेंट्स। और मैं अक्सर आपको देखती हूँ, आप उनके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, मिट्टी के साथ, उन लोगों के साथ, काइंड ऑफ दे हैव बिकम अ फैमिली टू यू, एक्सटेंडेड फैमिली। तो प्लीज हमें थ्रू दिस मीडियम टेल अस व्हाट ऑल वर्क यू आर डूइंग फॉर contribution through Sakhi welfare, because Sakhi is not just welfare, it's just not an NGO, it is hope for many thousand people who have got skill set there, who are now independent, who are making their livelihood, who are contributing to their family, and who are living a life of ultimate, financial freedom. So please suggest. More than financial freedom, I think respect and eventually liberty, because I want, women to be able to decide for themselves. Once they are married and they are not financially independent, they have to go according to, the way their family decides for them. In the initial years, it's the father, पहले उनके पिता उनके लिए डिसाइड करते हैं, फिर उनके पति उनके लिए डिसाइड करते हैं, और जिनके बेटे होते हैं, तो मैं सच बताऊं कि बाद में उनके बेटे उनके लिए डिसाइड करते हैं। तो एक एक स्त्री अपने बारे में कब डिसाइड कर रही है। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, वो अपने पैसे खुद कमाएं, चाहे उन्हें इस बात की जरूरत पड़े या ना पड़े। सो सखी वेलफेयर सोसाइटी अभी 1.5 साल पहले ही रजिस्टर हुई है, ऑल्दो मैं बहुत सालों से उनके वेलफेयर के लिए, और सिलाई केंद्र हमारा 5 साल पुराना है जिससे मैं काम करती आ रही हूँ। सो ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, जब मेरे पास थोड़ा टाइम भी था, हालांकि हम लोग डॉक्टरी का काम पूरे टाइम करते रहे, तो हमें कोई एक दिन भी ऑफ नहीं था, इवन वो ऑन संडेज वी वर बिजियर इनफैक्ट। लेकिन इन लड़कियों के साथ मैंने मिलकर मैंने सोचा कि इन दिनों मास्क की जरूरत है, तो क्यों ना अब हम मास्क बनवाने शुरू करें। और मास्क के आइडिया मैं देती थी, फैब्रिक में लाके देती थी, और इनिशियल लॉकडाउन के दिनों में मैं इनके घर पर कपड़ा पहुंचा देती थी। तो घर पे कपड़ा पहुंचने से लड़कियां मास्क सिलकर दे देती थी, जिन्हें हम ऑटोक्लेव करके जो अपने मेडिकल है उस पर यूज करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे और लोगों ने भी वो मास्क मांगने शुरू किए, तो कुछ फैक्ट्रीज जब धीरे धीरे अनलॉक हुआ, फैक्ट्रीज से ऑर्डर्स आए, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ऑर्डर्स दिए, और बहुत से और लोग जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में। और अभी खुशी की बात यह है कि हमारे मास्क इंडियन एम्बेसी आयरलैंड भी गए हैं। तो कुछ ही दिनों बाद जब भी वो आयरलैंड पहुंचेंगे, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि उन लोगों को भी वो पसंद आएंगे, क्योंकि वी वांटेड टू प्रमोट मेक इन इंडिया आल्सो एंड हैंडलूम आल्सो थ्रू दिस। सो सखी ने अपने मास्क अभी इंडियन एम्बेसी इन आयरलैंड में भी भेजे हैं। तो जैसे ही जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे, तो वो भी हमारे लिए एक गर्व की बात होने वाली है। तो मास्क तो चल ही रहे थे, लेकिन अब रिसेंटली मैंने थोड़ा एक स्टेप और आगे लिया, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि जो आप समूह चाहते हैं, हमारा एक 16 लड़कियां जो कि बिल्कुल ट्रेंड हैं, उनका समूह है। तो ये काम जो गवर्नमेंट की जैसे स्कूल की ड्रेसेस सिलने का काम है, वो सब सिर्फ समूह को ही मिल सकता है, लड़कियों के या लेडीज के समूह को ही मिल सकता है। तो मेरा इस तरह से बाय चांस मैं उस दिन कलेक्ट्रेट में थी, तब मैंने देखा कि कुछ ड्रेसेस का काम हो रहा है, और मैंने एकदम पता किया कि ये ड्रेसेस कहाँ से सिलकर आ रहे हैं। तो अब हमें उसके लिए भी ऑर्डर मिला है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब उस ऑर्डर पे भी हमारी लड़कियां काम करेंगी। तो अब मास्क के लिए मुझे एक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे ये है कि अगर मास्क के ऑर्डर्स नहीं भी आते, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में इतनी बिजी हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मास्क के बाद क्या करेंगी लड़कियां, जब मास्क की जरूरत नहीं होगी, तो इनका कुछ ऐसा बना दूं जिससे ये कई सालों तक इनका कार्य जो है वो चलता रहे। तो अब गवर्नमेंट की ड्रेसेस के ऑर्डर उनको आए हैं, मंडे से हमें कपड़ा भी उनका मिल जाएगा, और लड़कियां अब उस काम में लग जाएंगी। तो मेरे सिर से एक ये बहुत बड़ी टेंशन जो है वो रिलीफ होने जा रही है जल्दी। तो ये कुछ काम है, और बाकी सखी वेलफेयर सोसाइटी वी बीन डूइंग मोटिवेशनल टॉक्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, दैट वी ऑलवेज डू, एंड फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो, planting trees, cleaning the Malan River, and all those things we are already doing. But this was the major thing during lockdown, which we have achieved. I believe it's an achievement, even though it's a small achievement. Any achievement is not measured by the success of the financial way, but it is measured by the hopes it creates. It is measured by the contribution it creates. So be it a small contribution or big, but these people are financially independent, they are little free,
They are free to choose, they are free to have the decision. And you rightly said, बहुत ही खूबसूरती से कि हमेशा अक्सर फीमेल्स का रिमोट कंट्रोल किसी ना किसी मेल डोमिनेशन में रहता है, चाहे वो फादर के हाथ में रहे या हस्बैंड के हाथ में या बाद में सन्स के हाथ में. नॉट लाइक दैट दे वोंट ट्रीट यू राइट, बट ऑब्वियसली जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं आप खुद ही कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं, चाहे आपको वहां से कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जाए या नहीं बोला जाए. बट नहीं, सॉरी, दैट्स ये वेरी जो कंट्रोल ब्यूटीफुल. है ना, ये हाँ. हम खुद देते हैं उन्हें। हम खुद जी देते हैं और जी अपनी जी. मर्जी से देते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ women आर मेड अप. इट इज नॉट समथिंग रॉन्ग, बट ओनली राइट थिंग इज इन मोस्ट प्लेसेस जहां फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है वहां इसका मिसयूज नहीं होता, और जहां राइट. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होता वहां कभी कभार इसका मिसयूज हो जाता है. इट इज नॉट दैट बिल्कुल. वी डोंट वांट टू डू थिंग्स फॉर अ फैमिली. सो राइट. जस्ट अ लिटिल करेक्शन in that. बहुत बहुत अच्छा, and I really love your intellectual skills. I really love the clarity of thought you always have. डॉक्टर राखी बताइए एक चीज. यू नो डॉक्टर itself is a very big profession. बहुत ही, मैंने जब भी आपसे बात की है, सर्जरी के बाद सर्जरी, यू हैव ऑलवेज 4 5 सर्जरीज एट द सेम टाइम. नजीबाबाद में आपका क्लिनिक इकलौता क्लिनिक है जिसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल कम डाउन देयर. लॉकडाउन के दौरान भी हमने एक्सपीरियंस किया, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक so you maintain social distancing, but a lot of volume of people were there. आपका प्रोफाइल हमेशा से ऐसा रहा है जिसमें बहुत ही एंगेजमेंट, टाइम, डेडिकेशन, सब चीज चाहिए, राइट? उसके बाद आप ये सोशल एंडेवर्स के लिए, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, आप लाइफ को एक अलग ढंग से जीने के लिए टाइम कैसे मैनेज कर पाती है? आई वुड बी सो इंटरेस्टेड टू टेक लर्निंग फ्रॉम इट. आई थिंक आई एम ऑलवेज ऑन द मूव. मैं कभी थकती नहीं, अगर क्योंकि ये सब मेरा पैशन है. सबसे पहले आपका डिजायर होना चाहिए, कि आपको पैशन होना चाहिए, कि आपको ये काम करने में मजा आना चाहिए. तो जब आपको कुछ काम करने में मजा आता है ना, तो आप थकते नहीं हो. नंबर वन. और टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मॉर्निंग में कुछ ऐसे पल होते हैं जब मैं नीचे अपनी ओपीडी में होती हूँ. अगर आप मेरे साइड पे सीट पर आके बैठ जाएंगे, कुछ 11 से 3 बजे तक जब मैं ओपीडी में रहती हूँ, अगर आप मेरी साइड पे सीट में आके बैठ भी जाएंगे, शायद अगर मोदी जी भी आके वहां बैठ जाएंगे, तो मेरी नजर उन पे नहीं जाएगी, क्योंकि आई एम टू फोकस्ड एट माई पेशेंट्स एट दैट टाइम. जब मैं ओपीडी देख रही होती हूँ, तो मेरा ध्यान, मेरे कई फ्रेंड्स आके ये कंप्लेन करते हैं बाद में कि तुमने देखा ही नहीं कि हम, नाउ दे हैव अंडरस्टूड. अब वो समझ गए हैं कि इस टाइम पे जब ये पेशेंट्स देख रही है, तो अगर हम पेशेंट बनकर आएंगे तो उसी तरह से हमें देखा जाएगा. उस समय वो डॉक्टर राखी है, और वो डॉक्टर राखी के अवतार से बाहर नहीं आएगी. सो इसी तरह से जब मैं सोशल वर्क करती हूँ, और स्पेशली ग्रामीण महिलाओं से रिलेट करती हूँ, तो मैं हमेशा साड़ी पहनकर जाती हूँ, या उनके तरह लगने, या उनको अपने से रिलेट हो जाए, वो उस तरह से दिखती हूँ. जब मैं किसी और क्राउड में होती हूँ तो किसी और तरह से जाती हूँ. तो उसी तरह से आई थिंक टाइम मैनेजमेंट हो, और आपका पैशन हो, और आपको थकावट नहीं होती अगर आप अपने मन का काम कर रहे हैं तो. एंड ऑब्वियसली बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज दे आर नॉट टायरिंग मी, वो मेरे को एंटरटेन करते हैं. जैसे ही मैं थकी हारी आऊंगी, तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिससे या तो मैं हंसूंगी, या मैं अपना सारा काम का स्ट्रेस भूल जाऊंगी. तो बच्चों के साथ तो आई लुक फॉरवर्ड टू द टाइम, टू स्पेंड विद बोथ माई सन्स. तो वो मेरे एंटरटेनर्स हैं, फुल लाइफ टाइम एंटरटेनर्स. सो आई थिंक टाइम निकालने की डिजायर होनी चाहिए. टाइम जरूर निकल आता है अगर आप विद अ लिटिल बिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट. ऑब्वियसली यू कैन डू इट, ऐसा भी नहीं है. तो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. Yeah, and you do that, you seem to have a magic touch. Perhaps you do that everything so perfectly. So perfectly. I've seen you growing your kids, I've seen your social contribution, and it always gives me this kind of feeling. Wow, how does she manage all this thing with so much perfection? I've seen your work, obviously, that's commendable. So passion converted into purpose. That's what I think you have been teaching us all the time. I would move to another question. Thank you so much. It has been very, very intellectual so far and very interesting. I feel like listening to you over and over. So I have this question for you. We've seen you living a life with high and clear thinking, always adding value in people's life, ever evolving. As you said, you're passionate, you are always evolving. And as a highly successful and influential woman of our nation today, what is your advice to other women? What they have to achieve in their life?
For women, I already advised, in fact I only want them to, women are multitaskers, we all know. एक स्त्री है जो सारे तरह के काम कर लेगी, जैसे देवी माँ के आपने देखे हैं कितने सारे हाथ दिखाते हैं. सो हाउ आई रिलेट दैट इमेज इज, वो कहीं अगर पायलट है तो अपना एयरप्लेन भी चला लेगी, अपने बच्चे भी देख लेगी, अपना खाना भी बना सकती है, मुसीबत आने पे अपने घर की हेल्प भी कर सकती है. सो विमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, मल्टीटास्कर्स हैं. लेकिन बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम अपने पर ध्यान ना देकर अपने परिवार या अपने आसपास या इवन और चीजों में ध्यान देते हैं, पर अपने पैशंस को हम कहीं ना कहीं पीछे चले छोड़ते चले जाते हैं. तो आई वांट दैट द विमेन, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, परिवार और सब में आप पूरा ध्यान दीजिए, लेकिन अपने पैशन को कभी मत भुलाइए. एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए आपकी, जो आपके और सदस्यों की आइडेंटिटी से अलग हो. आइडेंटिटी आई थिंक मीन्स ओनली दैट कि अपनी एक आइडेंटिटी रखें, अपने जो विचार हैं, और कई कई बार हम लोगों की जो विमेन होती है ना, उनको घर के लोग ही बहुत डिस्करेज कर देते हैं. अरे छोड़ो, तुम ये क्या करोगी, मैं कर देता हूँ. So that kind of a attitude, not because they don't want them to venture out, but sometimes they feel कि वो ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं. तो मैं ये कहना चाहूंगी, चाहे आप 30 के हैं, 40 के हैं या 50 के हैं, लाइफ तब तक नहीं खत्म होती जब तक आप लास्ट अपनी ब्रेथ नहीं लेते, जब तक आखिरी सांस नहीं आती लाइफ खत्म नहीं होती. समय कभी भी बदल सकता है. और अगर आपको अपने आप में कोई भी बदलाव लाना है, या कोई चीज ऐसी है जो आप बहुत सालों से सोच रहे हैं कि हाँ मैं ये करती तो ये ऐसे होता, तो सोचिए नहीं, उस चीज को करिए, उस काम में लगिए. तो उस काम में अपना मेहनत या अपनी जो इनपुट है वो दीजिए. जरूरी नहीं है आप उसमें सक्सेसफुल हो. ऐसा कोई नहीं चाह रहा कि भाई आप उसमें, कोई नहीं आपको जज करेगा कि आप उसमें सक्सेसफुल हुए या ना हुए, पर आपने रिस्क तो उठाया, आपने अपने लिए कुछ किया. तो so I want that the women around us, it's never too late for anything. That is what I've seen. कभी भी जब भी आपको ख्याल आए, आप 50 इयर्स के हो गए हो, मुझे ये काम करना था, मैंने ये नहीं किया, तो नाउ इज द टाइम. कल ना होने दें उसको, आज ही सोचें कि आज मैं इस बारे में जो मुझे पसंद है क्या कर सकती हूँ, ताकि मुझे जब मैं लास्ट अपनी सांसें ले रही हूँ तो ये ना सोचूं कि ये रह गया करने से. तो ये यही मेरा एडवाइस है फॉर ऑल दीज women. Very, very rightly said. So, girls, identify your purpose and whatever desire, deep desire you got inside you, just live up to it. That's what Dr. Rakhi always says. And we have seen her doing also with a lot of women in the small district area. I've seen her just like spending so much time with them, and I've seen those women growing so well. And this gives such a deep satisfaction. Such a deep satisfaction. Thank you so much. Dr. Rakhi, this is one more question, though you have answered it about, that you live the life with so much passion that you manage to create that ultimate balance eventually between your personal, professional, and, your duties as well. Tell us one thing. Is it any time that you have to prioritize something between them, and what becomes the priority in that case? Like suppose if you have to switch between sometime, your multi roles which you have a personal role which is very demanding. You have two, kids who are growing up and they need complete attention. Then obviously you have the kind of job where you need a complete dedication. Then you have adopted this NGO where you are contributing a lot and you are talking about their new initiatives. So how is that you prioritize, your entire day? How do you really find out? Is there any challenge, struggles, any kind of pressure you get across from people around? Because when you are doing everything so perfectly, perhaps the expectation bars also are, there from all the levels. Yeah. See, one thing is there, my husband and my family has been very, very supportive. I think without their support, even my family, my mother-in-law, my parents-in-law, my parents, and my brothers and sisters, all those who are close to me have helped me in some point or the other when there is shortage of time. And even my children, in fact, whenever there is a project related to tree plantation or something like that, they are always there to help me. And more so, when I'm busy, there are times when I'm stuck to the laptop or making a presentation, or sometimes when I have a lot of patients and I'm drifting in and out from my house, and they see कि मम्मा आज बहुत थकी हुई है तो थोड़ा दूर ही रहो उनसे. So I think things prioritize अपने आप हो जाती हैं, अगर आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट हो तो. My husband also,
कभी कभी मुझे लगता है कि आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माय, दिस एनजीओ इज टेकिंग अ लिटिल बिट मोर ऑफ माय टाइम, बट सबको पता है कि ये अभी ग्रोइंग स्टेज है। तो जब हम एक स्टेबलाइज उस पे आ जाएंगे, आई हैव केप्ट अ मैनेजर, आई हैव केप्ट पीपल टू हेल्प मी, बट फिर भी जब तक मेरा वो नहीं रहता, एक टाइम आएगा जब मेरे सुपरविजन की जरूरत कम होगी। सो सबको पता है कि ये अब ग्रोइंग स्टेज है। एज फॉर माई पेशेंट्स, क्योंकि मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो वो लोग ऑलरेडी समझते हैं कि मेरे ये टाइमिंग्स हैं और मैं अपने टाइमिंग्स की पाबंद हूँ। और डिलीवरीज तो देखिए कभी भी आ जाती हैं, तो नेचुरली अगर मेरा पेशेंट आता है तो दैट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी। द सेकंड प्रायोरिटी इज माय फैमिली। मैं ये कहूंगी कि मेरे पेशेंट मेरे फैमिली से भी ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि मेरी फैमिली अंडरस्टैंड कर सकती है कि आई एम लैकिंग टाइम या मैं थकी हुई हूँ। लेकिन मेरे पेशेंट को शायद मेरी पर्सनल बातों के बारे में इतना नहीं पता होगा कि शायद मैं थकी हूँ या क्या है। बट व्हेन आई हैव टेकन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेशेंट, तो मुझे ये लगता है कि वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है बीइंग अ डॉक्टर। Second is obviously my family. Or NGO, why I'm keeping it at the third position is because only if I have the support of my patients and my family can I do something for my NGO. So ऐसा नहीं है कि उसकी प्रायोरिटी कुछ कम है औरों से, लेकिन इस श्रेणी में मैं उसको तीसरे नंबर पे रखती हूँ। तो आई थिंक मैं तभी उनके लिए काम कर सकती हूँ, किसी के लिए भी, जब मैं खुद स्टेबल खड़ी हूँ, जब मेरी जड़ें मजबूत हैं, तो तभी मैं औरों के लिए काम कर सकती हूँ। अदरवाइज अनलेस मैं एम्पावर्ड हूँ, इफ आई एम नॉट एम्पावर्ड, देयर इज नो वे दैट आई कैन एम्पावर द अदर्स। सो माय वर्क नंबर वन on the list, and second is my kids and my family. So I think that's how it goes. the Yeah, very, very rightly said. Quite practical and quite real and authentic answer it has. Okay, tell me one thing, please. What are those principles which one can implement, be it a woman or a man, one can really implement in the life, which will, apart from doing their regular job, you can still contribute in others' life. You can still contribute to society as a whole. You can still contribute to the changes you want to see in the society. So, what are those principles one we can implement in our life? Number one is stop complaining. If things are not going good around you, we the early morning we start complaining. Every department of this nation, every politician of this nation, they are doing their work. I don't know. I'm not in favor of any party or politics or anything like that. But first is, if you want to make a change, first thing is see that change around you. Just try making that change around you. Suppose you are having any electricity problem. So first thing is, instead of just sitting on social media and writing about them, that also works in some ways. But then why don't you try and get a solution from the local electricity department and see how deep the cause is. Similarly, हम स्वच्छता की भी बात करते हैं, क्लेanliness की भी बात करते हैं, लेकिन अपने घर से कभी नहीं शुरू करते. For example, when I started this Malan river drive, and a lot of things were being said about cleaning the rivers and cleaning the surroundings. पर मुझे लगता था कि मैं किसी और को ढूंढूं कि वो आए यहाँ उसको साफ करे, क्यों ना मैं ये इनिशिएटिव लूं, एंड लेट्स सी पीपल just might follow. So it's one thing is stop complaining and try making a change. Start working on trying and making a change. आप घर पे बैठे हाथ पे हाथ धरे बिना कुछ किए ये सोचते रहे कि आपके आसपास सब कुछ मैजिकली बदल जाएगा, दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन. सो इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, इतनी पॉपुलेशन है, कहाँ क्या चीज की जरूरत है इसका भी नहीं पता लग पाता कई बार. सो इवन इन बिजनौर, जैसे मैं अल्ट्रासाउंड करती थी, मैं बिजनौर जिले में पहली महिला चिकित्सक थी, शायद वन ऑफ द फर्स्ट सोनोलॉजिस्ट. तो फीमेल फीटिसाइड के साथ बहुत जोड़ा जाता था उसको, भ्रूण हत्या के साथ. तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि क्यों ये भ्रूण हत्या का लांछन सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर आता है. ऐसा नहीं कि कुछ ब्लैक शीप थे इस प्रोफेशन में या है भी, लेकिन यहीं बैठे बैठे आप ये सोचते रहे कि लोग अपना सोचना बदल दें, तो वो कैसे बदलेंगे अगर आप उन्हें अपनी साइड नहीं रखेंगे, एक डॉक्टर की साइड नहीं रखेंगे, तो वो कैसे बदलेंगे आप अपने विचार आप डॉक्टर्स के बारे में. सब लोग कहते हैं डॉक्टर्स लूटते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं. आई एम सेइंग जस्ट हमें बीच में रखिए, बिल्कुल सेंटर में रखिए, ना दिस एक्सट्रीम ना दैट एक्सट्रीम. बट थिंग्स विल चेंज ओनली व्हेन यू वांट द थिंग्स अराउंड यू टू चेंज. तो कंप्लेन बंद करके मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए. जरूरी नहीं है हम जीतें, लेकिन हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. दैट इज व्हाट आई बिलीव. Exactly. So, viewers, be the change you want to see in the world.
That's what she's always trying to say. And she has all the rights to say because we have seen her being the change herself in that small district area. You would not know, you would be surprised to know if I tell you कि वहां पर भ्रूण हत्या के केसेस काफी कम हुए हैं. लोगों की जो हेल्थ है, स्पेशली फीमेल्स की हेल्थ है, बहुत इम्प्रूव हुई है. बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतने सालों में क्रिएट हुई है. और ये सब चीजें पॉसिबल हुई इनके कारण. डॉक्टर राखी आनंद, who is there with us today, and really this lady deserves a lot of love, a lot of appreciation for that she had been doing for nothing, just from because she feels like, because she feels there is a need to change, so she became the change. And we just like must follow this in our life too. Dr. Rakhi, we salute you for this. I totally love you for this kind of work which you have been doing. ओके, प्लीज आप बताएं इस पेंडेमिक के दौरान हम मुझे ये जानना है कि बियॉन्ड ड्यूटी व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस यू हैव डन एट योर लेवल which has brought a lot of changes. Sakhi का हम लोगों ने already सुना आपसे. You have done so phenomenal work for Sakhi and for a lot of Sakhis now. And मुझे ये भी जानना है आपके environment के contributions के बारे में जो आपने इस दौरान किए हैं. So please guide our viewers what all contributions you have been doing. See, what I have done is we've had some live sessions on Facebook to educate our patients. बहुत से patients इस time पर जब शुरू में lockdown हुआ तो बहुत से patients कोरोना वायरस को लेकर इतने भयभीत थे, इतने डरे हुए थे. They were so scared because this was something very novel. We've read about coronavirus in our college, but then we never encountered such a pandemic in all our life till now. सो जितने भी लोग इसके बारे में डरे हुए थे, मुझे ये लगा कि मुझे बाहर आकर सबसे पहले उनका डर थोड़ा कम करना है, लेकिन उन्हें 3 सावधानी की जो बातें हैं वो बतानी है. सो वी वर्कड ऑन जगह-जगह मैंने फेसबुक पे अपने सोशल मीडिया के द्वारा, बिकॉज़ बाहर तो हम निकल नहीं सकते थे. मास्क तो बनवाए ही, लेकिन साथ-साथ मैंने बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़ेशन, हैंड सैनिटाइज़ेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोपेगेट किया. ऑल दीज़ 4 मंथ्स हम यही करते आए हैं. जहाँ तक पेशेंट्स को देखने का सवाल है, बहुत से लोगों ने ये बोला कि कुछ डॉक्टर्स ने अपना फीस बढ़ा दिया या डॉक्टर्स पेशेंट देख नहीं रहे हैं. लेट मी टेल यू, मी एंड माय हस्बैंड, नॉट इवन अ सिंगल डे अनलेस वी वर टोल्ड टू स्टॉप बाय द गवर्नमेंट, नॉट इवन अ सिंगल डे डिड वी डिनाई द पेशेंट्स. हम पेशेंट्स को हमेशा देखते रहे, चाहे वो ओपीडी के रूप में, चाहे ऑनलाइन के रूप में. एक हमारा ही हॉस्पिटल था जिसने मैक्सिमम डेज जो हैं इस लॉकडाउन में, जितने भी डेज अलाउड थे हमें, पहले इनिशियली कुछ क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन हमने बहुत कुछ सफर भी किया इसकी वजह से. बीच में एक कोरोना पेशेंट आने की वजह से 4 डेज हमारा हॉस्पिटल बंद भी रहा. और अभी तक मैं और मेरे हस्बैंड अपनी सावधानी की वजह से ही कोरोना के संक्रमण से बचे हुए हैं. तो ये भी एक ब्लेसिंग्स है हमारे पेशेंट्स की. और मैं ये बताना चाहूंगी कि नजीबाबाद में और भी नर्सिंग होम हैं, और भी सुविधाएं हैं. और जो सुविधाएं यहाँ बदली हैं, सिर्फ मेरे अकेले की वजह से नहीं है, शायद मेरी जन जागृति की वजह से जरूर है. लेकिन यहाँ जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है भ्रूण हत्या के खिलाफ, या जो एनजीओस काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है. शायद मेरी जन जागृति की वजह से हो सकता है वो शुरुआत हुई हो, या लोगों का ध्यान उस तरफ मैंने केंद्रित किया हो. लेकिन आई थिंक अकेले ये सब चीज करना पॉसिबल नहीं है. तो मैं, आपने अभी जो कहा मेरी तारीफ में, मैं उसका पूरा क्रेडिट हमेशा नहीं लेना चाहूंगी. मुझे ये लगता है कि मे बी आई एम ऑल्सो अ फ्रैक्शन ऑफ इट. शायद मैं एक पिविटल पॉइंट भी रही हो सकती हूँ, लेकिन ये ज्यादातर सभी के कंसोलिडेटेड एफर्ट्स की वजह से पॉसिबल हुआ है. तो जो आपने एनवायरनमेंट के लिए बताया, इस दौरान हमने खूब सारे पेड़ भी लगाए हैं, और अपने जो पीछे पहले लगे हुए जो पेड़ थे उनका भी संरक्षण करने की कोशिश की है. और लॉकडाउन के दौरान आई थिंक इसी तरह की एक्टिविटीज हम लोग करते रहे हैं. एक भी दिन हमने एक तरह से छुट्टी नहीं ली. आपको ये बताएं, ट्रैवल हम लोग नजीबाबाद में रहे इसलिए पाते हैं क्योंकि हम कुछ टाइम काम करके 2-4 दिन के लिए हम ट्रैवल के लिए चले जाते हैं. पर अभी पिछले 4-5 महीनों से हम कहीं भी जाने में असमर्थ हैं. तो ये भी हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत बढ़ा देता है कई बार. और हर समय काम और वही बच्चे और फैमिली, तो हम थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जरूर हो गए हैं इसकी वजह से. लेकिन फिर भी वी आर स्टिल मच बेटर देन अदर्स, यू नो, who are not able to sustain during this time. So we have always been working during this lockdown. हमने एक भी दिन बंद नहीं हुए, ना हमने कोई फीस बढ़ाई. जो हमारे पहले फीस थे
वही रेट्स चले। और जब भी हमें लगता है कि जिस पेशेंट कोई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके पास पैसे ना होने के कारण उनका इलाज नहीं हो रहा, तो हम उन्हें ज़रूर इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं और उन्हें सही गाइडेंस करके किसी भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज देते हैं। और कई ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जिनका इलाज भी फ्री किया गया है। तो ऐसा कोई भी चीज़ हमने नहीं किया, बिकॉज़ आई ओन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, वी डोंट गेट एनी ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट स्टिल जो हमारे अपने दिल से हमें लगता है हम उनका काम भी फ्री में करते हैं, तो कोई ऐसी उसमें कोई बताने की या बहुत बड़ी बात नहीं है। आई थिंक इतना जान लेना ज़रूरी है कि हम सभी की सेवा में हरदम नजीबाबाद में रहे हैं और वहाँ हम अपनी सर्विसेज देते रहे हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन जब सब डॉक्टर्स डरे हुए थे कि हम अपने बच्चों के पास वापस कैसे जाएं, इस टाइम पे कहीं हमें कोरोना संक्रमण ना हो जाए, इस वजह से डरे हुए थे, तो हम बिल्कुल बिना डरे ये अपनी सेवाएं लगातार देते रहे हैं। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन एनी डॉक्टर कुड हैव गिवन ड्यूरिंग दिस टाइम। So well said. And to the entire doctor community, to entire frontliner, we are very, very thankful. And to all those people who have been working so hard for this mission, for bringing, gender equality. वो भी इस तरह के जिलों में इतने छोटे छोटे प्रांतों में उन सबको हमारा तहे दिल से शुक्रिया। ये सब सर्विसेज, दिस इज बियॉन्ड ड्यूटीज, इट नीड्स अ लॉट ऑफ पैशन, इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, और हर एक लेवल पर एक चेंज लेकर आना बहुत ही खूबसूरत प्रयास है ये। वी अप्रिशिएट दैट। अच्छा, प्लीज टेल मी व्हाट एडवाइस would you ever give to your youngest self if you ever had a chance? इफ यू वुड हैव आस्क्ड मी 10 इयर्स अगो, 10 साल पहले ये पूछते आप, तो मैं कहती कि कभी भी छोटे शहर में नहीं जाना, शायद 10 साल पहले। सो बट नाउ व्हाट आई विल से इज कि जो भी आप सोच रहे हैं करने के लिए, उस पे डरो मत, आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ पहले से ही क्लैरिटी हो कि इसमें आप प्रोग्रेस करोगे। बट मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि मुझे ये डर लगता था कि आई विल फेलियर का डर जो था मेरे में, वो कुछ कम हुआ है इन सालों में। तो आई बिलीव कि शायद अगर मैं यंगर होती तो मैं अपने आप को कहती कि फेलियर से मत डरो। मुझे कुछ इस तरह से मैं कहती शायद। Good one. Okay, Dr. Rakhi, now these are one-liner I'm going to ask you. So we'll ask one-liner. आपके mind में जो भी पहला thought आता है आप उससे complete कर सकते हैं, right? Be someone who इंस्पायर्स, इंस्पायर्स you अदर्स। are already. Yes, you are already inspiring. You are someone who is already inspiring so much. Life is all about. Life is all about, being useful for others, or being useful for yourself, just being useful. When I face a challenge, I first. I first believe that I can overcome it. Very good. I let go fear of failure by. Failure, acceptance. It's always better to, accept that you have failed. So unless you accept, you will never ever, work in the direction of, turning your failure into success. Unless you accept that yes, I have failed, how will I work on that part of my this thing that, where I failed. I failed somewhere and I have to accept it. Yeah, yes, I failed. And why can't I, do better next time and change my failure into success? So first thing is acceptance. Accept that you failed. Okay, thank you. To unwind I. Though I know this answer, but I I still want to hear from do you. sound healing and I love to travel. But these days I go to Rishikesh and I do sound healing. That is my Yes. best way to, unwind. And that's very, very attractive to see your pictures. That very exquisite. It really calls you to go. It pulls my heart to go and Oh, just like, sometime. You yes. should come over And sometime. We should plan it yeah, together, and it's going to be a phenomenal experience if you can, actually relate to it. yeah, for sure. All right. My favorite quote is, Karma never loses an address. That is my favorite quote. I believe in karma. okay, three books I swear by. Okay, the first book is A Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy, which I read a long time ago. And I love Dr. Brian Weiss, who's a psychiatrist and he's a past life regression therapist. I have read all his books, Many Life, Many Masters, Love is Only Love is Real. I have read all his books. So, and third, actually, this should have been the first. The first one is
So that's so it's like the one, two, three. Now the first one is Osho. I love to read Osho. I just finished Creativity, and now I'm reading his Bliss. So I think if you can understand and if it instills a thought in you, you must try one of these three. Very good. Thank you so much. That's very interesting because the readers are leaders, and whenever you see someone who is so influential, you will find out there is always the power of reading the habits which they have got, and they are always reading something which really start reflecting in their persona altogether. It starts becoming their personality. So that's what we are seeing. I always see those people, suppose who are learning the self-development books, you will suddenly see the shift in their behavior. You will suddenly see the energies and the people surroundings are changing. And same way, as I say, you are always radiating empathy. You are always radiating life. You are radiating love. So now I gather where this all comes from. Thank you Definitely, so it's much for the books sharing. are our best friends, and well Yes. said for that. Yeah. All right. 5 words you define yourself in. Honest, number one. Genuine, or I think they're the same. I don't know. Energetic. I always feel that I am energetic, and compassionate. I'm compassionate and sometimes cry watching movies also. That was a so I think there is some amount of compassion which I want to let it go also. And I'm compassionate, or you can say passionate, both, and creative. Are they 5 words? Yes, they Yeah. are 5 words. Very good. It is an absolute honor. It's an absolute pleasure to have a conversation with you. It has been so fruitful. The entire conversation had led me a lot of clarity, and I'm sure it has brought a lot of clarity for our viewers. So, viewers, that's Dr. Rakhi Anand, and as promised to you, every week I bring to you someone who has really lived a life of inspiration and is doing the work without any motives. But there is a purpose. There is a purpose to add value in others' life. There's a purpose to break our own stereotypes. There's a purpose to bring change in the society. हम अक्सर ऐसे चीजों की बात करते हैं हम समाज में ये चेंज देखना चाहते हैं हम खुद में ये बदलाव देखना चाहते हैं now when I bring you this inspiring lives they have actually lived they have walked the talk they've lived a life of ultimate inspiration they have changed their own setbacks they've changed also the setbacks of the society as a whole so as you see, that was Dr. Rakhi Anand with us, and it had been like absolute pleasure to listen to you, Dr. Rakhi. Please say some final words to our viewers before we say bye bye. First of all, thank you so much. And before we go, I would just say in one line, guys, follow your passion. Now is the time when you want to do something for yourself or do something for the society, whatever you want. Just follow your passion, and first make yourself happy before you trying to make others happy around you. First make yourself happy, and once you are happy, you can, I think, spread happiness all around. Only when you're happy from within, you can spread happiness all around. Only when you're empowered, you can empower others and get even more empowered yourself. So those are my final words. Just be yourself. That is it. Just be yourself. Follow your passion. Just be yourself. Thank you so much, Dr. Rakhi. That was very beautiful. And even in the conclusion, while you said, you actually given a very deep message, which we all must follow. We are so thankful that you invested your time during this weekend, which you could have spent with your family, but you have still thought of society as a whole, and you still managed to share your insight, which will give a lot of upliftment, a lot of clarity to a lot of our listeners. And we thank you from core of the heart. And I totally love you always. I love you too. I love you too. You are such a sweetheart. You have this charismatic voice that I want to say. I really love to listen to you. You Oh, really have. You really should do something more from this voice. I always think. I'll call you and tell you you have this charismatic, enigmatic voice. So you should thank you. do with what you're doing already, and you're such a humble person. I follow that from you. You are also an inspiration for me. I learn to be as humble as you. So thank you so much for inviting me today. Thank you so much. Thank you so much. Love you all. Okay, viewers, see Bye you. Thank you bye. for being with us. Thank you.